Hello everyone and welcome to my YouTube channel The United Road. And after almost almost 2.5 3 weeks, finally the marks, as you can see, it's almost gone. So feeling relieved. More than anything, I'm at this point of time feeling really relieved. And it was a menace. It was a menace. It was such a pain that at this point of time, I'm just feeling happy that it's gone. I'm just feeling happy that it's gone and nothing else. So, welcome to the stream, guys. Lot of talk about myself. So, getting back to what we usually does. Man United transfer window, Man United transfer news, latest of all the updates throughout the day. Not just about United, but also about a few of the other clubs who are with us. So, Navneet sir, welcome to the stream. I'm absolutely fine. How are you? So, Pradabha, hello. Celia, welcome to the stream. As long as Rashford doesn't leave us, I don't think he was going anywhere. We will start with Rashford. All that news came last night about Rashford. That PSG is interested, and all of a sudden, lot of things. Lot is going on in the market. Chelsea चेल्सी बिल्कुल पीछे पड़ी है हाथ धो के सबके दे वांट एवरीवन चेल्सी का ये हाल है दे वांट एवरीवन एंड दे विल गेट देयर टारगेट्स दे हैव लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड तो ये है दनियाल भाई वेलकम टू द स्ट्रीम संदीप भाई ये सारा का सारा रैशेस हो रखा था तो उसको हटाने के लिए करना था बिल्कुल फाइनली भाई चाहिए था मुझे ये आई लाइक क्लीन शेव बट रैशी प्लेड यूनाइटेड और नॉट वो बाद में पता चलेगा आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट माइट हैपन माइट नॉट माइट हैपन सो होगा नहीं होगा वो भगवान जाने नॉट गोइंग टू लाफ एट रैशफोर्ड इफ ही गेट्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इवन आफ्टर नॉट प्लेइंग वेल दैट हमारे बोर्ड वाले झंडू हैं if a player is playing you and you are still falling for that trap and giving him the contract तो भाई तुम पागल हो फिर मैं बोर्ड को ही पागल बोलूंगा ना why would I go after the player मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि भाई you are falling into the trap रोनाल्डो लवर वेलकम टू द स्ट्रीम अरे कोई दिक्कत नहीं है संदीप भाई कोई दिक्कत नहीं है देखो रैशफोर्ड थिंग कॉन्ट्रैक्ट का हो ना हो इफ ही प्लेज वेल अगले साल उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा 2024 में मतलब अभी भी इसके बाद भी एक साल रहेगा so if he plays well fine enough even after not playing well if he gets a contract then we should laugh at the board हमें बोर्ड पे हंसना चाहिए भाई हम प्लेयर पे हंस के क्या करें we should laugh at the board कि भाई तुमने फालतू में एक बंदे को दे दिया कॉन्ट्रैक्ट who doesn't deserve it एग्जैक्टली ठीक है भाई दे दे तो वी विल लाफ एट द बोर्ड हमारे पास वैसे भी देयर आर सो मेनी प्लेयर्स अवेलेबल हु डजंट हु डोंट डू एनीथिंग ऑन द पिच एनीवे सो जीएच फॉर 8 मिलियन आई सेड बिफोर आई विल से इट अगेन 8 मिलियन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जीएच पर 8 मिलियन फॉर जीएच मेक्स सेंस उसके ऊपर नहीं भाई डबल डिजिट्स में नहीं जाना है फॉर जीएच यू डोंट हैव टू गो इनटू डबल डिजिट्स फॉर जीएच सिंपल एज दैट हम एक में जा रहे हैं वो ठीक है हमें दो में डबल डिजिट में नहीं जाना है 8 मिलियन फॉर अ प्लेयर लाइक जीएच मेक सेंस बिकॉज भाई वो इंजरी प्रोन है सो देखते हैं विशाल भाई वेलकम टू द स्ट्रीम वोट किया थैंक्स अ लॉट फॉर द सुपर चैट ग्लोरी ऑलवेज बट ग्लोरी भाई कब आएगी भगवान जाने अभी तो विशाल भाई द वे वी आर परफॉर्मिंग वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर और मार्केट में भी हमने अपना हाल देख लिया सो गाइस फ्राइडे नाइट है the stream is going to go for a long time so keep on joining make sure मैंने ट्विटर पे भी शेयर कर दिया है so make sure that you guys join in जिसके भी बस का हो सके जो भी शेयर कर सके प्रतीक भाई फ्रेंकी डियोंग सिचुएशन भाई he will stay over there जहां तक अब मुझे दिख रहा है he might stay over there he might stay over there so I am still hopeful that Bruno, Rashford and Sancho will improve. नहीं improve करते तो भाई पापा का क्लब तो है नहीं फेंको बाहर देखो हमारा जो इट्स नॉट अबाउट द फैंस प्रेशर में संजय भाई क्लब ने बाकी अच्छे डिसीजन कब लिए
ये फैन का प्रेशर नहीं है, इट्स जस्ट दे नो हाउ टू प्ले विद द इमोशन ऑफ द फैंस, सिंपल एज दैट. रोनाल्डो लवर, आई नेवर प्रेडिक्ट द स्कोर, आई नेवर प्रेडिक्ट द स्कोर. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई अपडेट नहीं है भाई, नो अपडेट, एब्सोल्युटली नो अपडेट. तो स्टार्टिंग 11 गाइज, आई थिंक स्टार्टिंग 11 में चेंजेस होंगे. स्टार्टिंग 11 आई थिंक वी आर गोइंग टू मेक फ्यू चेंजेस फ्रॉम द लास्ट गेम. सो देखते हैं भाई. मेरे हिसाब से स्टार्टिंग 11 में कल मलासिया फॉर शॉ, मलासिया फॉर शॉ, एंड मिडफील्ड में आई गेस मैकफ्रेड में से एक बाहर जाएगा, एक बाहर जाएगा. अब कौन खेलता है, तो मेरे ख्याल से एरिक्सन गेट्स बैक एंड रोनाल्डो स्टार्ट अप फ्रंट. तो ये होगा चेंज. मगवायर मेरे ख्याल से कल शायद स्टार्ट कर जाए फिर से. डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन रैबियो. भाई देखो, माइट वर्क माइट नॉट वर्क, ठीक है. यूवेंटस में प्रॉब्लम, क्योंकि भाई उसको पैसे बहुत मिल रहे हैं ना यूवेंटस में. यूवेंटस में ही वाज गेटिंग लॉट ऑफ मनी, यहाँ पे भी उसको वही मिलेगा. तो ड्रेसिंग रूम में क्या करता है क्या नहीं, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग. बट ओवरऑल ही इज नॉट अ ह्यूज अपग्रेड. जितना हम पैसा दे के ला रहे हैं, जितना हम पैसा दे के ला रहे हैं, ही इज नॉट अ ह्यूज अपग्रेड लाइक दैट. ब्रेंटफोर्ड नहीं भाई, ब्राइटन से टफ नहीं है संजय भाई, ब्राइटन से टफ नहीं है. ये बोल सकते हो कि ब्राइटन से जिस तरीके से हम खेले विद ब्राइटन, इवन विदाउट देयर मेन प्लेयर्स, they did great. Even without their main players, they did great. So ये बोल सकते हो, but we cannot say, we cannot say कि भाई ब्राइटन से better है ब्रेंटफोर्ड. I won't say that. Javi says he is important to his plans. भाई इंपॉर्टेंट तो है प्लान्स के, बाद देखो वो कब से वही चीज बोल रहा है और तब से फकाने का. आयुष भाई वेलकम टू द स्ट्रीम. फ्रेंकी डिसीजन टाइम. भाई देखते हैं कब लेगा डिसीजन. मलासिया, रोनाल्डो, वैंडविक, लेट्स सी. बहुत मुश्किल है. 4 चेंजेस मुझे नहीं लगता होगा. रैबियो इज ऑलमोस्ट डन. ये तो होना ही था विशाल भाई. रैबियो वाज गोइंग टू बी डन. रैबियो वाज गोइंग टू बी डन. इसमें कोई डाउट ही नहीं था. इसमें कोई डाउट ही नहीं था. सो feeling like an Arsenal type season for us. Let's see. CL, thanks a lot. Hopefully he performs. Most of the United fans, they want him to perform, but he cannot keep on getting away with subpar performances. भाई हम खेले कहाँ. अच्छा खराब तो छोड़ो, हम खेले कहाँ. We didn't even play. भाई physicality है, but as I said, we have the pace to trouble Brighton. 2-1 भाई. देखो मैं यूनाइटेड के गेम्स में प्रिडिक्शन करता ही नहीं. आई नेवर प्रिडिक्ट इन यूनाइटेड गेम्स. सो बिकॉज द वे वी आर प्लेइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैं क्या ही बोलूं. मैं क्या ही बोलूं. इट्स गोइंग नो वेयर फॉर अस. पहला गेम था, बट वी नीड टू मेक चेंजेस. वी नीड टू मेक श्योर कि भाई इस चीज को हम जल्दी से सही करें. Simple as that. Simple as that. If we have a season like Arsenal last season, I will be very happy. चलो देखते हैं भाई, देखते हैं. गौरव भाई वेलकम टू द स्ट्रीम. बेस्ट डेज तो भाई भूल जाओ अभी. इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहा मैं कि बेस्ट डेज आ जाएंगे एंड ऑल दैट. ये तो अभी मैं सोच भी नहीं रहा अबाउट बेस्ट डेज एंड ऑल. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट वेयर विल गो if we are not having, पहला गेम ऑलरेडी हार चुके हैं. सेकंड गेम टुमारो नाइट. सो गाइस कल के लिए वॉच अलॉन्ग डेफिनेटली होगा. 9:30 आई विल बी जॉइंड बाय सेबेस्टियन एज वेल. सो माय मिडफील्ड फॉर टुमारो. मेरे भाई मैं तो चाहता हूं कि फ्रेंकी डॉनी और एरिक्सन एंड ब्रूनो, मतलब गो ऑल आउट. आई एम एक्सपेक्टिंग रॉनी टू स्कोर. देखते हैं भाई, खेलेगा तब तो. मुझे रॉनी से कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर ही प्लेज और नॉट. ठीक है, गोल मारेगा ऑब्वियसली आई विल बी हैप्पी, बट आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस टीम अ रॉनी सेंट्रिक टीम. मुझे रॉनी सेंट्रिक टीम नहीं चाहिए भाई. यूनाइटेड जहां पे 11 के 11 बंदे खेले वो चाहिए. एग्जैक्टली.
Klopp sold Coutinho when he wanted to leave. भाई देखो, क्लॉप सोल्ड कोटिन्यो बिकॉज अगर किसी कोई पागल क्लब आके तुम्हारे वन ऑफ द ओकेइश प्लेयर के लिए 145 मिलियन दे दे, भाई ही वाज अ लॉन्ग शॉट मर्चेंट, ही वाज अ लॉन्ग शॉट मर्चेंट, उसके लिए तुम्हें 145 मिलियन मिल गए, तो भाई तुम क्यों नहीं बेचोगे उसको, क्यों नहीं बेचोगे उसको? यू नो, सिंपल एज दैट। तुम उसको लात मार के फेंकोगे यार, उसको लात मार के फेंकोगे। मार्टिनेज एज 6, डॉनी एरिक्सन। चलो देखते हैं। विशाल भाई सेज ब्रेंटफोर्ड 1-2 रोनाल्डो एरिक्सन स्कोर्स। लेट्स सी इज एरिक्सन मार्टिनेज प्लेज अ सीडीएम। मुझे नहीं लगता एरिक्सन इज गोइंग टू प्ले अ सीडीएम। Jibrilla, welcome to the stream, brother. I'm fine. Tomorrow's game, Ronaldo is staying, guys. Ronaldo को भाई कोई ले नहीं रहा। No one wants Ronaldo. You know, that's the thing I'm saying. No one wants Ronaldo. If any team wanted Ronaldo in the Champions League, he would have left by now. No, he would have left by now. No one wants Ronaldo. Simple. That's why he is here. Otherwise, he would have gone by now. वो अभी तक जा चुका होता। Garabai says my team: De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Malacia, Gardner, Eriksen, Sancho, Bruno. Bold team which is not going to happen. My Papa Perez वैसा ही है, he will bully everyone. He also bullied Ronaldo as well भाई, उसके भी एज का मजाक उड़ाया उसने, obvious सी बात है। 20 goals from Ronaldo. Let's see. Before the season, you know, before he started throwing the tantrums, I said the same, so let's see. भाई टिलेमंस क्यों चाहिए ध्रुव भाई? Why do you need टिलेमंस? मुझे एक रीजन बताओ what he will do which our midfielders at this point of time cannot do. We have Eriksen, we have Donny. Just tell me one thing that he can do and our midfielders cannot do. अरे भाई उसको, he was never appreciated at Madrid. He was never appreciated at Madrid. उसको कोई घंटे का फर्क नहीं पड़ता। He had won whatever he has to won. So भाई गोलकीपर के लिए ये आ रहा है कि 7 million we will have गोलकीपर के लिए बजट, हम लेते किसको हैं भगवान जाने। भाई डेया आज से नहीं, बहुत टाइम से बोझ है, ये लोगों को अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है, बिकॉज नाउ वी हैव अ मैनेजर हु विल स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम द बैक, एवरीथिंग फ्रॉम द बैक। उसको हर चीज पीछे से चाहिए और नाउ दे विल स्ट्रगल बिग बिग टाइम। अब उनको समझ में आएगा कि भाई इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा पीछे से, यू नो, ही कैन नॉट स्टार्ट द प्ले फ्रॉम द बैक। सो अभी है, अभी अब धीरे धीरे ना लोगों को भी अकल आएगी, सबको समझ में आएगा कि वाई, यू नो, वी शुड हैव गॉन फॉर समवन एल्स। राया इज गुड, राया इज गुड। भाई देखो राया है, सांचेज है, you know, these guys play from the back and these guys do their job perfectly, you know, these guys do their job perfectly. So इसके अलावा मैं अभी क्या ही बोलूं कि हमें तो भाई गोलकीपर चाहिए, हमें गोलकीपर चाहिए, अभी नहीं चाहिए, अगले सीजन चाहिए। हिम्मत भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। टीए और डलो, ऑब्वियसली टीए कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई, डिफेंसिवली दोनों घटिया हैं, बट टीए ऑफेंसिवली जबरदस्त है। भाई देखा है मैंने, मैं तभी बोल रहा हूँ ना, टिलेमंस कैन नॉट डू एनीथिंग डिफेंसिवली, और हमारा मिडफील्ड वैसा ही है जहां पे बंदों से डिफेंड नहीं होता। आवर मिडफील्ड इज ऑलरेडी फुल ऑफ गाइज हु कैन नॉट डिफेंड। टेकिंग टिलेमंस मेक्स नो सेंस। Kylian Navas was good. Navas was good with his feet. I won't say world beater, but definitely an upgrade on De Gea when it comes to kicking the ball. Hello Danish bhai, welcome to the stream. I will go with Sanchez as goalkeeper. Bhai Sanchez is happy. Sanchez is happy. So
सांचेज को मैं क्या ही बोलूं, obviously when it comes to Sanchez is happy with Brighton. Guys, ये टॉपिक थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए. Rashford we will talk first and then we will get into other things. Rashford, United feel that his value in the market is 120 million. United है, मतलब चलो ठीक है. Actually, in actual, I think that a player like Rashford, with age on his side, 60 million, 60 to 70 million. So what do you guys think is the actual value? According to you, what do you think? What do you think is the market price of Rashford? Market price of Rashford according to you guys. $60 million से हिमित भाई, 70 million से संजय भाई. भाई मेरे हिसाब से 60 to 70 के बीच में ही है. Because of his age and I still have, as I said, I feel बहुत potential है, but वही है, why he is playing with so much weight on his shoulder, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा. दानिश भाई says 55 to 65. डिपेंड्स भाई, 10 गोल स्कोर करेगा तो 90. ध्रुव भाई says भाई रैशफोर्ड को सेल कर देना चाहिए. भाई सेल करोगे तो उसकी जगह पे लाओगे किसको? ध्रुव भाई चलो सेल कर दिया, उसकी जगह लाओगे किसको? दी भाई वेलकम टू द स्ट्रीम. 60 मिलियन मेरे हिसाब से भी 60 मिलियन है. आई थिंक 60 इज फेयर प्राइस. 60 इज फेयर प्राइस. भाई कहाँ हुआ है हेयर वी गो जीएच के लिए? कुछ भी ऐसे हवा में बातें मत करो. गप्को के लिए वी हैव नॉट पुट अप अ बिड. Celia absolutely love Rashford 1 billion. भाई नहीं हुआ है हेयर वी गो यार, ना तो जीएच किसी के लिए हेयर वी गो नहीं हुआ है. जीएच इज लाइक इंजरी प्रोन. अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो हम वी माइट जस्ट गो फॉर जीएच. मैं वही बोल रहा हूँ, बेच देंगे तो लेंगे किसको? बेचने को चलो बेच दिया. सपोज वी सेल रैशफोर्ड, हु विल बी प्ले? एलांगा है, फिर गर्नाचो है. गर्नाचो के साथ भाई थोड़ी जाके खेलोगे तुम. यू आर नॉट गोइंग टू प्ले गर्नाचो. मैं वही बोल रहा हूँ भाई कि उसको लेगा, वो करेगा कौन? विशाल भाई, हु यू थिंक, सॉरी नॉट हु, कितना प्राइस लग रहा है विशाल भाई? हाउ मच यू थिंक रैशफोर्ड इज वर्थ इन द मार्केट? शेन भाई वेलकम टू द स्ट्रीम. भाई देखो पीआर वैल्यू हटा दो यार, पीआर की वैल्यू हटाओ. विशाल भाई सिंपल क्वेश्चन, और सबसे भी है भाई कितना? देखो रैशफोर्ड जाने नहीं वाला कहीं. सिंपल सी बात है. रैशफोर्ड इज नॉट गोइंग एनीवेयर गाइस. Rashford is not going anywhere. We are just talking about how much he might cost, उसकी वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं. We are talking about his valuation. अभी तो भाई थोड़ा सा शांत तो है मार्केट. देखो राबियो के साथ मार्केट थोड़ा गर्म होगा, बट लेट्स सी. भाई एम्बापे पर रैशफोर्ड, ये देखो भाई मतलब मतलब भाई अगर हम बोलेंगे ना पीएसजी को, पीएसजी बोलेगी इधर आ पहले. रैशफोर्ड हैज बीन बैड, एलांगा वर्स टेक्निकली. मैं वही बोल रहा हूँ कि रैशफोर्ड देखो बिकने नहीं वाला. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट प्राइस. रैशफोर्ड रूमर्स ही रहेंगे. ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर. भाई देखो वो उनको पसंद नहीं है, चलो बेचने के लिए बोल देते हैं. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द वैल्यूएशन यू थिंक फॉर रैशफोर्ड. वैल्यूएशन 70 प्लस. ऑलराइट, 100 मिलियन तो भाई कोई नहीं देगा. आई थिंक मैं 60 टू 70 बोल रहा हूँ. विशाल भाई सेइंग 70 प्लस. बाकियों ने भी 55 टू 70 के बीच में ही बोला है. भाई ये उसका लास्ट चांस है. सिंपल सी बात है. दिस इज द लास्ट चांस फॉर रैशफोर्ड. मैं लास्ट सीजन भी यही बोल रहा था कि भाई इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग दिस सीजन ही इज गॉन. And it goes without saying. If he's not performing, he's gone. Simple.
गौरव भाई से जैमी करेगा। सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही इज स्ट्रगलिंग, बट भाई 2 साल पहले के उसके स्टैट्स भी कोई नहीं भुला सकता। हेलो अनिश भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। भाई देखो, नया कॉन्ट्रैक्ट दो ना दो, इफ यू आर फॉलिंग फॉर हिज पीआर एंड गिविंग हिम अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनीथिंग, भाई संजय भाई फर्स्ट ऑफ ऑल 7 years ऑफ एट द क्लब, ठीक है, जिसमें से पहले के 3-4 साल है ना, ही हैज प्लेड अंडर द लाइक्स ऑफ एलवीजी और मरीनियो, ठीक है। तो ये 7 साल में से कितने गेम वो पहले के 3-4 साल में ढंग से खेला है वो भी देख लो जरा। ही हैज प्लेड गेम्स, ही हैज प्लेड नंबर ऑफ गेम्स, बट कौन सी पोजीशन में और मैनेजर ने किस तरीके से यूज किया है ये देखना बहुत जरूरी है। यू नो दैट वी हैव टू सी, वी कैन नॉट जस्ट गो आउट एंड से कि भाई इतने गेम्स खेली हैं कुछ किया नहीं है। हर चीज देखना है। मोटा इज कमिंग बैक फ्रॉम ट्यूरिन, भाई मोटा गया क्यों है ट्यूरिन, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। जावी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, चलने दो भाई। साउथहैम्पटन मैकार्थी, ठीक है भाई चलेगा मुझे। ऑब्वियसली वी आर नॉट विनिंग भाई। अनिश भाई, आई एम नॉट इवन गोइंग इनटू डिटेल, वी आर नॉट गोइंग टू विन, वी आर नॉट गोइंग टू विन। भाई ये हरी वाली जर्सी, हाँ आज तो थर्ड किट भी आई है गाइस, वी आल्सो हैव टू टॉक अबाउट द थर्ड किट। भाई सी Rashford, I think lot of people rate Rashford, but he is, he is not performing up to the standards, that's the problem। वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहा अभी। भाई यूरोपा लीग फाइनल तो सबको ही याद है भाई। भाई कहां से जीतेंगे हम? पीपल हु आर सेइंग दैट वी विल विन अगेंस्ट लिवरपूल, हाउ आर वी गोइंग टू विन अगेंस्ट लिवरपूल? मुझे ये ऑप्टिमिज्म समझाओ भाई, जस्ट मेक मी अंडरस्टैंड द ऑप्टिमिज्म, हाउ आर वी गोइंग टू विन अगेंस्ट लिवरपूल? शन भाई, रोनाल्डो obviously he is not for sale, the entire world knows, the entire world knows। ये पुदीन हरा वाली जर्सी क्यों बनाएगा? इस थर्ड किट नंबर आउट ऑफ 10, हाउ मच you think is the third kit out of 10? For me, 3 max। अरुण भैया, वेलकम टू द स्ट्रीम। अबे काहे के बड़े भैया, और इसको ले ही नहीं रहा कोई भाई, इट्स कंफर्म्ड ही इज स्टेइंग, नो वन इज टेकिंग हिम। जब कोई लेगा नहीं तो ये देखो -60। चलो भाई, पार्क तो नहीं करने वाले हम, बस गौरव भाई से -1, निविन से 3, प्रांजल से 5, हिमित से 6। भाई देखो इनका डिफेंस तो बिल्कुल, इनका डिफेंस वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेंट को तो, बट वही है ना कि भाई हमारा मिडफील्ड ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो दानिश भाई। आई थिंक ब्रेंटफोर्ड गेम विल बी अ ड्रॉ, आई थिंक। भाई देखो, अगर वी आर मेकिंग द चेंजेस देन वी कैन डेफिनेटली गेट द विन। संजय भाई सिंह, इतना घटिया किट डेफिनेटली। जर्सी भाई मेरे लिए 3 है, दीप भाई से 6। भाई ऑलरेडी आवर प्लेयर्स कैन नॉट पास प्रॉपर्ली। भाई छोड़ो भाई, वी आर वियरिंग दिस ग्रीन वाला किट फॉर आवर गेम अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड। ये हम ग्रीन वाला किट अपना ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट पहन रहे हैं, तो भाई गॉड सेव अस, गॉड सेव अस। भाई ट्रेंट को ही यू कैन टारगेट एज अ डिफेंडर उनके लाइनअप में, सिंपल सी बात है। वर्स्ट किट एवर भाई, इससे भी वर्स्ट शायद थर्ड किट मैंने देखा है, रात में दिखाई देगा अच्छे से। भाई मेरे लिए 3 आउट ऑफ 10 है भाई, मेरे लिए तो 3 आउट ऑफ 10 है।
भाई होम और अवे किट से तो भाई जा ही नहीं सकते, कंपेयर ही नहीं कर सकते यार। होम और अवे किट तो इट्स एब्सोल्यूट गोल्ड दिस टाइम। दिस टाइम थर्ड फर्स्ट एंड सेकंड किट इज एब्सोल्युटली गोल्ड। भाई आई हैव रियलाइज्ड अपोनेंट डोंट इवन नीड टू मेक एग्जैक्टली। भाई हम खुद देते हैं ना बॉल, वी गिव देम द बॉल, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। भाई ये ग्रीन बना के आई थिंक दे आर ट्राइंग टू ट्रोल द फैंस भाई। मुझे तो यही लग रहा है कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू ट्रोल द फैंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सिंपल। संजय भाई पतंजलि किट। भाई रैबियो की सैलरी पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। वी विल टॉक अबाउट रैबियो सैलरी कितना देना चाहिए। ही वांट्स 10 मिलियन, हाउ मच शुड वी पे। आज मैं सारी बातें जो लोग आ रहे हैं उन्हीं से करवाने वाला हूं मैं। फ्राइडे नाइट है, ज्यादा लोग नहीं आते फ्राइडे नाइट को, इट्स टोटली फाइन, रिलेटेबल है ये। सो जो भी आ रहा है मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग योर प्रेजेंस काउंट। और जब तक लोग आते रहेंगे कमेंट सेक्शन चल रहा होगा, ठीक है। निविन भाई से 8 मिलियन, भाई इस बंदे को मैं 4 मिलियन ना दूं ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू नो, बट ये होगा नहीं मेरे हिसाब से। 5 शुड बी द मैक्स, 5 शुड बी मैक्स। 7 मिलियन, 8 मिलियन टॉप्स। भाई इतने भी क्यों देने हैं इसको। अनिश भाई says green kit for a squad that doesn't know how to pass। माज भाई र्यून हो गया आपका, तो जाना बेकार हो गया। बट एनीवेज ओल्ड ट्रैफर्ड एक्सपीरियंस इज ऑलवेज ग्रेट वन। बट यू नो अब देखो 22 तारीख को व्हाट एवर फैंस डू। रैबियो 120 मैक्स डेफिनेटली, पर 150 रुपये देगा। मैं वही बोल रहा हूँ भाई, बट अब कैंसिल नहीं होगा यार। ये मोटा ने जाके अपनी मरवा ली है ना, मम्मी मम्मी से मिलाया अब ये, क्या ही बोलूं अब। रैबियो को 2 रुपीज पर सैलरी। भाई जिसका कमेंट मिस हो जाए वापस से डाल देना यार। भाई पहले गेम में बॉडी लैंग्वेज दिखाई नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ यू नो गौरव भाई। That's what I'm saying. That's what I'm saying. कि at this point of time the problem is they are not trying. वो भाई पहले गेम में बॉडी लैंग्वेज ऐसा लेके आए थे कि जैसे मतलब they don't even care. All right, best of luck नाज भाई। इस आर्सेनल, बट जिस तरीके से आर्सेनल भी खेल रही है भाई, तो चलो 25 को यूसीएल ड्रॉ है भाई, हमें उससे क्या लेना, हम तो यूएई वाली टीम है भाई। ये होप ही कर सकते हैं, व्हेन ही इज कमिंग उसमें होप ही कर सकते हैं भाई। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, यू नो आई एम स्टिल बैफल्ड व्हाई आर वी आर गोइंग आफ्टर रैबियो। मैं खुद बैफल्ड हूँ भाई, मैं दूसरे से क्या ही बोलूं। यू नो मुझे खुद अभी नहीं समझ में आ रहा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर गोइंग फॉर रैबियो। Deepai says Rabio's salary already feels like a waste and we have not even paid yet. Definitely play youngster भाई, we should do that। मुझे तो वही नहीं समझ में आ रहा, why is Gardner not playing। ठीक है कुछ गेम्स अगर रैशफोर्ड नहीं खेलता तो भाई रैशफोर्ड की जगह प्ले गर्नाचो। कितना गंदा खेलेगा यार, ऑलरेडी इतना गंदा खेल रहे हैं, वी आर ऑलरेडी प्लेइंग सो बैडली, इससे ज्यादा गंदा क्या खेलेगा। भाई देखो जो प्लेयर यहाँ पे आएगा ये ऑब्वियसली वांट हिम टू डू वेल, सिंपल एज दैट। whoever is coming, whoever is joining, I want him to do well। एक बार ज्वाइन कर ले उसके बाद भाई obviously I want him to perform। अभी obviously we can criticize जिस तरीके से we are going after a player which we don't need as such। Mejbri is going on loan guys, Mejbri is going on loan। दीप भाई Mejbri is going on loan, so let's see कहाँ जाता है वो, बट उसके लिए लोन बहुत इंपॉर्टेंट है। Loan for player like Mejbri makes all the sense, you know, makes all the sense। So देखते हैं, इस लोन तो चाहिए भाई। गौरव भाई से द हेल गार्डनर, मैं वही बोल रहा हूँ भाई मौका तो दो डॉनी को, यू नो वरान तो चलो जल्दी आ जाएगा, डॉनी को गर्नाचो को कुछ मैचेस में मौका दो। अभी चलो टू अर्ली टू से फॉर गर्नाचो, बट भाई डॉनी को तो एटलीस्ट मौका दो। नहीं खेलता हटा दो, कौन बोल रहा नहीं खेल रहा तो रखो।
पेलेस्ट्री इज गोइंग टू स्टे, देखते हैं भाई, अभी हो सकता है कुछ। भाई गप्को कैन बी ए गुड साइनिंग, बट वही है एरिडिवीजे के नंबर्स और उसके बाद प्रीमियर लीग में आने के बाद के नंबर्स, यू नो, इट कैन टोटली चेंज। मास भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग, द वे थिंग्स आर गोइंग, आई थिंक ही वोंट मेक अ मूव। बहुत ज्यादा ही डिले हो गया है। वी आर स्टिल होपफुल, बट आई थिंक ही माइट एंड अप जस्ट स्टेइंग ओवर देयर। ठीक है, मेरे ख्याल से वो वहीं रहेगा। भाई देखो, रैबियो वाज नेवर अ गोल स्कोरर, रैबियो वाज नेवर अ गोल स्कोरर, सो गोल से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यू नो, मिडफील्ड में हमारा वैसे भी कौन ही गोल मार रहा है। गाइस, इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और भाई जो भी यहाँ पे बंदा है, लाइक मारते जाओ यार। यू नो, बहुत बार लोग भूल जाते हैं। मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। सो भाई देखो, अभी डेहिया ये सीजन पूरा खेलेगा। पेलेस्ट्री इज इंजर्ड राइट नाउ, ठीक है। डेहिया ये सीजन पूरा खेलेगा, डेहिया इज नॉट गोइंग एनीवेयर, बट नाउ द मैनेजर नोज दैट ही इज नॉट द सोल्यूशन। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट, है ना, ही इज नॉट द सोल्यूशन। अनुज भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। डीडीजी इज द लीस्ट प्रॉब्लम। भाई देखो, लीस्ट विस्ट हटा दो अभी अनुज भाई, लीस्ट विस्ट का हटा दो। प्रॉब्लम वो भी है, ठीक है, एज यू सेड। ठीक है, अभी हम उस तरीके से प्लान करके ही नहीं चल रहे, तो हम आगे का क्या बोले। भाई इतना वेला टाइम थोड़ी है। जो बंदे एक पर्टिकुलर क्लब के यू नो डाई हार्ड फैन हो, उनकी वीडियोस देख के समझ में भी आती है बात। भाई ही, देखो उसको अलग अलग पोजीशंस पे खिलाया है, ठीक है, उसको अलग अलग पोजीशंस पे खिलाया है। सो लेट्स सी, उसका कोई ऐसा यूवेंटस में ही यूज्ड टू प्ले एज लेफ्ट सेंटर मिडफील्ड, ठीक है। सो भाई हो जाता भाई, सब यही चाहते हैं, सब यही चाहते हैं, बट होंगे नहीं यार वो। दे आर टू बिग अ क्लब टू गेट बैंकरप्ट। Javi and Frenkie de Jong. I consider Frenkie de Jong important for me. भाई मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये खेल रहे हैं उसके साथ। यू नो, दे आर एंटाइसिंग, दे आर मेकिंग श्योर कि भाई फ्रेंकी को भी लगे कि भाई ही इज अ पार्ट ऑफ द टीम। बट ऑब्वियसली दे वांट टू सेल हिम यार, वो साफ साफ दिखता है भाई। द इफ ही वाज Rabiot, if he was performing the way he performed for PSG, ठीक है भाई, उसको एक आई वुड हैव टेकन हिम इन अ हार्ट बीट, ठीक है, इफ ही वुड हैव प्लेड लाइक द वे ही प्लेड फॉर पीएसजी। मैं वही बोल रहा हूँ भाई, पीएसजी ने उसको सस्पेंड किया, यूवेंटस में उतने टेंट्रम थो नहीं किए हैं, बट वहां पे इतनी सैलरी पे था कि भाई वो बेंच पे भी बैठा है तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा घंटे का। ही नोज ही इज नॉट गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द फ्रेंच नेशनल टीम एनीवे। सो वो बंदा चिल कर रहा है, यू नो, वो चिल कर रहा है अपनी लाइफ में, सिंपल सी बात है। Paradise leaving PSG, yes. Paradise is definitely leaving PSG. And Paradise is wanted by Juventus. Paradise is wanted by Juventus. So let's see. वो रैबियो निकाल के पैराडाइस लेना चाह रहे हैं. So the money they will take from us, they will get Paradise from that money. सिंपल सी बात है. अब भाई देखो, whoever will don this jersey, कोई सा भी प्लेयर हो, I would love to see him perform. ठीक है, क्रिटिसिज्म रहेगा अगर अच्छा नहीं खेलता, बट ये नहीं होगा कि भाई जस्ट बिकॉज आई डिडंट लाइक यू बिफोर, I am not going to, you know, like you even when you are performing. Simple as that. Simple as that. Simon, welcome to the stream. Why is this saga about? When is this saga of Frenkie de Jong? Simon, I think this is gonna go long. They are saying, you know, 31st of. So let's see. We still have like what, almost 3 weeks. So let's see. Attitude should come with a fiery skill. Absolutely. Lakshay bhai, at this point of time, we are just hoping for Frenkie de Jong to say yes. यही है भाई हमारा विंडो, and apart from that, we are chasing Rabiot बस. For me, it's a 3 out of 10 window so far. For me, it's a 3 out of 10 window so far.
3 out of 10. Guys, at this point of time, rate your window. What do you think Rabiot can do for us? What do you think? चलो मान लिया Rabiot आ रहा है. As I said, guys, I am going to make sure that you guys are taking part in the conversation a bit more. Imagine Rabiot आ रहा है. What do you expect honestly from Rabiot? ठीक है? Imagine he is a United player. अब तुम कुछ नहीं कर सकते. You cannot kick him out. He is a player that is already at the club. What do you think? What do you think? आता है तो what are you expecting from Rabiot? Danish Bhai says getting Frenkiedejong is turning out to be a CA. बिल्कुल. Sanjay Bhai says 15 then left. ये तो मैंने पढ़ लिया. Datta Bhai says I think United will go for Laimer or Savage. भाई Lazio के ओनर ने बोल दिया भाई Savage is not going anywhere. और 50 मिलियन में तो कतई कहीं नहीं जा रहा. तो Savage is out of the way. Out of the way. Danish Bhai says 3.5. Gakpo के लिए we will definitely try Lucky भाई. Simon says high time Barca took off the. They are not going to pay him. They are not going to pay him, Simon. That's for sure. They are not going to pay him. Instead, they want him to take a pay cut. Otherwise, they are willing to sue him. So there is no Savage news. Lazio's president confirmed he is not going anywhere. He is not going anywhere. They are done for the window. वही वाली बात है. Let's see. Hope वही करेंगे भाई. When someone is coming, तो hope we are going to hope that player perform. Whoever is coming in, our hope will be like they perform. Simple as that. Simple as that. रूप भाई से जब खराब परफॉर्मेंस किया तो मम्मी के पीछे नहीं छुपना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. लकी भाई दोनों ही नहीं आएंगे. एक के लिए लाजियो के प्रेसिडेंट ने बोल दिया है कि ही इज नॉट ऑन अ मूव एंड वी डोंट नीड टिलेमंस. टिलेमंस जैसे और बंदे हमारे पास ऑलरेडी हैं. Four out of 10 says Dibel, Lisandro. Exactly. गौरव भाई इतना उनके अंदर दिमाग रहता तो क्या ही बात थी. आज हमारा क्लब ऐसा एकदम झंडू क्लब बन के थोड़ी रहता. लाइमर इज अ मस्ट. लाइमर तो यार कब का ले चुके होने चाहिए. कब के लेके खत्म करना चाहिए था लाइमर को. Aaron, good question and with no answer from any of the United fans. Both are available for sale. Arthur as well as Rabiot both are available for sale, but we are not going for it. We are not going for him. Edson Alvarez मुझे नहीं लगता मूव करेगा भाई. Honestly speaking. संदीप भाई वो चले गए ना. Sandeep bhai, the marks are gone, so that's why. Good evening, welcome to the stream. Team with Rabiot, De Gea, Dalot, Varane, Malacia, Bruno, Rabiot, Sancho, 4-3-3. Elanga, चलो देखते हैं भाई. Elanga के ऊपर I will play करना चाहिए, honestly speaking. भाई एक इंजरी प्रोन है, एक टैंट्रम प्रोन है. One is injury prone, one is tantrum prone. No idea, Simon. Laporta is a politician, we all know. No news. Lakshay bhai, there is no news of Ruben Neves. Malin, welcome to the stream. Hot dog for dinner. Send it. Take pay cut, give your preferred position and evaluate. Exactly. By toxic relationship. Absolutely toxic. Edward, the thing is, we are not giving him a chance in the transfer window. We are setting him up to fail. We are setting him up to fail. That's the problem. That's the biggest problem. We are setting him at this point of time to fail. That's what we have done with every previous manager. Most boring transfer window, definitely. Lucky bhai, we are looking at Ziyech, but he is injury prone. So let's see. A source close to BVB. All right. नहीं भाई, ये नहीं चाहिए अभी. Hey Jim, welcome to the stream. I am fine. How are you? भाई देखो, सेस्को का कोई बैटल ही नहीं था. सेस्को was never a battle. Salzburg is owned by the owner of Leipzig. आपस में कर लिया, बात खत्म. No one had a chance with Sesko. They say in IPL tournament is won on auction table. Exactly. Transfer market is so key. That's great to hear, Jim. That's great to hear. नहीं भाई,
रोमेयो इज बैंग एवरेज प्लेयर. गप्को के लिए वी आर गोइंग, स्काई पे भी आ रहा था, गप्को के लिए वी आर गोइंग, बट व्हेन वी आर गोइंग टू मेक अ बिड वी विल हैव टू वेट एंड वॉच. भाई देखो, देयर वेयर फ्यू नेम्स व्हिच वाज सजेस्टेड बाय राल्फ, यू नो, अल्वारेज, हाइदारा, बट वी टर्न, हमने अपने कान बंद कर लिए भाई. वी जस्ट सिंपली क्लोज्ड आवर ईयर्स. सेस्को वाज नेवर आवर्स. सेस्को वाज नेवर आवर्स, लकी भाई. It was always Leipzig's. Regarding Rashford, he is staying at United. Exactly, he will start against Brentford. But as I said, this is a do or die season for him. You know, it's like a now or never time for Rashford at United. Not at this point of time. I won't say world class, but he's a great player. World class बोल देना is a bit over exaggeration. Absolutely, he talked about 10 players. Zakaria, Haidara, भाई Guardiol is too expensive. एंड ग्वार्डियोल के लिए उतना देने का सेंस नहीं बनता. हाइदारा, जकारिया, अल्वारेज तो भाई 50 मिलियन में हो जाते. These players would have costed us 50. He is not going this season. He is not going anywhere this season. Obviously that's why भाई दोनों का एक ही ओनर है यार. 25 मिलियन में बेच दिया, क्लॉज लगा दिया होगा 75-100 मिलियन का. You know, that's the money they are going to ask next season. Simple as that. Guys, if I miss out on any of your comments, make sure that you guys are putting it up again. ना भाई 30 साल का बंदा नहीं चाहिए मुझे. 30 साल का बंदा नहीं चाहिए मिडफील्ड में, वो भी पहला सीजन प्रीमियर लीग में 30 की एज में. ब्रोजोविक वाज नेवर फास्ट. यहाँ पे तो उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी. जावियर हर्नांडेज मेक्स सेंस. Javier Hernandez makes all the sense in the world. भाई that's what Ralph does. He builds a team. Ralph का वो स्ट्रक्चर है उस तरीके का where he knows the players. You know, he knows the players. But unfortunately भाई हमें उससे कोई लेना देना नहीं था. So we let go of Ralph. James says we are so at our transfer predicted in May that we will see. When I predicted in May that, you know, get the signings done, you know, people laughed at me. Oh, it's just May. Why are you panicking? Are you, you know, out of your mind or what? Look at us now. Look at us now. The world is laughing at us. प्रांजल भाई उसको वहां पे रहने का तो देखो कोई सेंस नहीं है. He won't be a starter or anything. So क्या करे सबित्जर का, क्या करे हम लेके? सबित्जर का क्या करे देता भाई बताओ. ये सबके लिए है. दिस इज फॉर एवरीवन लकी. दिस इज फॉर एवरीवन. भाई मोटा मैडनेस का पता नहीं, मोटा सैडनेस अभी जरूर है. यू नो, आई डोंट सी एनी मैडनेस. आई एब्सोल्युटली डोंट सी एनी मैडनेस. इट्स ऑल सैड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. Shivan says Gakpo would be a good signing. He would fit in well. I would gladly sign him, but he does. Let's see. You know, as I said, Rashford will get, you know, chances to prove himself. If he's not doing it, fine. मैं this is over exaggeration. ऐसा भी नहीं है. I will start Malacia, Aaron. Definitely Malacia. Goes without saying. Donny will have a future. As I said, this is just the first game. पहले गेम में the manager has already seen what they can do. McFred. Now he will hopefully will give more game time to Donny. But you have heard about Grealish? Yes, he is good. He is good on a free. तो भाई on a free players like, you know, Grealish, not Grealish. This one. So makes sense भाई. कोई no brainer होती हैं ये deals कुछ where you just, even for squad depth, you take those players. You know, even for squad depth, you take those players. Ayush bhai, welcome to the stream. We may come out flying tomorrow, but from भाई 22 का तो मुझे अभी से nightmare आ रहा है आयुष भाई. I am already, you know, having that nightmare regarding 22nd. So let's see.
Like United fans are one of the most realistic fans. They know what's going with this. So let's see. शिवम भाई देखो एक रैबियो आ जाएगा, गप्को के लिए we might try, but let's see. We have the same problems on the same. As I said, they are not going to be sold. We have talked about it before as well, Jim. So Belotti, Depay, GS. Depay कोई सेंस नहीं है. Belotti and GS you can जब Arnauto, when you are bidding for someone like Arnautovic, उसके हिसाब से सबका सेंस लगता है. उसके हिसाब से you can try for anyone. Simple as that. When you are bidding for someone like Arnautovic, Florian with at least 70-80 million. नहीं, यूनाइटेड फैंस तो वैसे भी नाम के यूनाइटेड है. दे आर प्लेयर एफसी. अभी यहाँ पे डेहिया को बोल दूंगा कुछ, तो भाई आ जाएंगे डंडे लेके. कॉमन सेंस लगाना नहीं है. बट हाउ डिड यू टॉक्ड अबाउट डेहिया? अबे भाई वो नहीं खेल सकता 2022 में फ्रॉम द बैक. सिंपल भाई. एसी मिलान देगा नहीं. टोनाली देंगे ही नहीं. वो इज नॉट फॉर सेल. विच कॉमेंट यू जस्ट कॉपी पेस्ट इट अगेन प्लीज. अच्छा, just shut up. Just shut up. When did he said he is not willing to move to United or Chelsea? Did he named any club that he is not willing to move? Has he made any statement regarding, he will not move at all? Did he say that? Just tell me yes or no, or just shut up. भाई तो फैंस क्या करेंगे दत्ता भाई बताओ. फैंस क्या करे? रॉकेट लॉन्चर से ओल्ड ट्रैफर्ड उड़ा दे. हैप्पी टू बी मिड टेबल क्लब क्या होता है? वी डोंट हैव एनी ऑप्शन. क्या करोगे एज अ फैन? व्हाट कैन यू डू? ओल्ड ट्रैफर्ड जाके उड़ा दोगे, या ग्लेजर्स को घर से बाहर निकाल के कुछ कर लोगे? यू आर टॉकिंग अबाउट बीइंग मिड टेबल क्लब. क्या कर लोगे एज अ फैन? व्हाट कैन यू डू? यूनाइटेड फैंस आर हैप्पी. भाई कोई हैप्पी नहीं है मिड टेबल होके. No one is happy. No United fan you can say is happy to be a mid-table club. हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है. कोई हैप्पी नहीं है. यू कैन से फ्रस्ट्रेटेड. भाई मिड टेबल से कौन हैप्पी है? आर्सेनल थोड़ी है भाई कि टॉप 4 ले लिया खुश हो गए. बट जब यहाँ पे when things are not in our hand, what we can do? Can we do anything? No, we cannot do anything. My prediction for tomorrow: with Maguire 2-1 Brentford, without Maguire 3-0 United. Let's see. Give frenkiedejong 18 million. उसके बाद भी वो मूव करेगा या नहीं करेगा, नहीं, विल नॉट श्योर, बट लेट्स सी. ट्राई एंड टेस्ट द वाटर. सो Jim, there will always be a belief that we can get him. There will always be a belief that we can get him, but at this point of time it's looking very unlikely. No, it's not an humiliation. भाई उसको 17 मिलियन दो. उसको 17 मिलियन चाहिए उसके. Why would he come in media and he will talk? भाई Arnautovic was good. भाई छोड़ो ना यार. बोर्ड के हिसाब से अगर चलेंगे तो हम तो वैसे ही बर्बाद है. Wookie, welcome to the stream. Every United fan wants young Jim. Simple as that. Exactly. भाई मिड टेबल बन के कोई खुश नहीं है भाई. Stop saying कि भाई we are happy with being a mid table club. No one is happy being a mid table club. It's just we don't have any option. I don't feel anything else. Exactly. Improvement तो है ही नहीं भाई. वही बात है ना भाई कि अगर मिड टेबल बन के खुश रहना होता तो भाई एस्टन विला पकड़ लेते, आर्सेनल पकड़ लेते. Best in one UCL, one La Liga, still unable. Exactly. भाई वो उनका सागा खत्म भी हो गया, बट यहाँ पे अपने लोगों को ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाने का बहुत शौक है. They are so engaged in making conspiracy theories. Our manager should have opted for 3 at the back. भाई 3 at the back के लिए डेप्थ कहाँ है? Aaron, one defender gets injured, you will have to again play 4 at the back. हमारे पास डिफेंडर कहाँ है 3 at the back के लिए?
What did the term I use? What did the term I use? Shimon says, I have been a supporter for 18 years. Exact worst in terms of all the sagas going around. It's a major joke. I have been exactly. If United win, but see, Wookie, there is never be there is never be there is not going to be an Old Trafford which is going to be empty. I don't think the Old Trafford will be empty. Few of the seats might be empty, but the entire stadium being empty, not to me. I absolutely don't believe that. Jim says I don't know much about Rabiot, but Arnautovic, that is bad. Both are bad. Exactly. We are, you know, exactly. That's what I said. That's what I said. You can read it from Danish's message, Lou. The agenda has already started against eriktenhag. The agenda, guys, has already started against eriktenhag. You can see it on the social media. You can see it clearly on the social media that the agenda has already started. It's not even hidden. It's not even hidden. So, like, as United fans, I don't think we should put Ten Hag. We can all see he's again being set up to fail. Simple. It was not 4-3-3, Simon. It was simply 4-2-3-1. With a false nine. It was not 4-3-3 in my opinion. We should go with 4-3-3. See, most of us are definitely backing him, but few of them already started their agenda. Because McFred started. Obviously, the manager wants to see the first game with a tried and tested, you know, duo. They didn't perform, and the news is out in the media that he is not happy with either of them. He is not happy with either of them. Exactly, Lucky. He needs player to fix. He need players on his side to fix this. It's a collective effort. We cannot just go out and say, "Oh, eriktenhag, you have to do all of this on your own." He cannot do it. No one can do it. Who is going to buy? We have talked about a Jim. Who is going to buy Maguire? Tell me one realistic club who will pay 50 million for Maguire. Totally agreed, Dada. Totally agreed. Thanks a lot, Kaushik bhai. Welcome to the stream. भाई वो रैशेस गया ना तो थोड़ा I just wanted to see. Mourinho was positive. Oh my god. अगर Mourinho was positive, then what's negativity called? If Mourinho was positive, what's negativity then? Absolutely. Many people, still, after the first game, they are all over Erik Ten Hag, messed up the team, not the team that we wanted to see, and all that. Social media. Even Newcastle are sensible. They are not going to pay 50 million. If we have got 100 million for Rashford, easily, Aaron, absolutely. But not before I get the player that I really, want with this team. Like, obviously, we need to arrange for a backup. Otherwise, वो 100 million फिर Glazers के pocket में जाएंगे, which I don't want. So if we are getting 100 for someone like Rashford, obviously sell him, but then line up those two players. Bench is the only way. We are not going to sell Maguire. Leicester know that they made the biggest profit and they don't want Maguire back. They don't want Maguire back at any cost.
So don't worry about that. ETH को 2 सीजन जज ही नहीं करना चाहिए. एग्जैक्टली 2 सीजन तो भाई मैं किसी भी मैनेजर को जज नहीं करता. फैंस है टेन हाग 2 to 3 years. Hopefully lucky. No one takes you seriously, Lou. No one takes you seriously. You know, your agenda is visible to everybody. You know, what do you want? Even if a guy is being the captain, that doesn't mean he cannot be dropped. I will criticize eriktenhag when he is not dropping Maguire even after shit performances. Simple as that. भाई कोई आना चाहता है बट हम उसको ले पाएंगे या नहीं वो भी तो डिपेंड करता है अरमान भाई. इफ वी आर एबल टू साइन हिम और नॉट. आना चाह रहा है, गुड थिंग, बट कैन वी डू द डील? लेट्स सी. Himit bhai, good night. Thanks a lot for joining in. Thanks a lot, Shambhavi. Lucky says eriktenhag new win matches. Obviously. भाई मैकफ्रेड का सॉल्यूशन हमारे पास टीम में ही अवेलेबल है. इफ ओनली वी प्ले देम. इफ ओनली दे प्ले देम. कहाँ न्यूज भाई? नॉट एट ऑल. Not by a long distance though. Gaurav bhai, we are just talking about, you know, the rumors of Rashford and how eriktenhag needs to make some changes in the team. So that's the only thing at this point of time we are talking, and how shameless Barcelona is. We are not. We need to live in present. We need to make, you know, we cannot be deluded. You know, we know that we are not at that level at this point of time. Why home kit for me stands out. Yeah, exactly. Dropping is the sensible thing. You know, and as I said, even eriktenhag as a manager at this point of time, you know, he's basically looking at what changes he can make, which player he can play to begin with, and which player he thinks is not up to the mark. So, fifth lever, they have activated it. Arun Bhaiya. We were the fans who were saying, I have not lost my cool, but you know, I just want to see how he reacts to it. Yeah, it's never gonna happen. Gaurav says Rashford rumors definitely is not going anywhere, and I agree with frenkiedejong saga as well. It will be going till the end. So, see, if it is going to the end, just pay the 18 million, 17 million. You have no choice. You have no plan B. You have nothing. So if you cannot, you know, if you are not able to do anything, just make sure that you pay that 17 million and you get the signing done. Ten Hag will take some time, obviously. Maguire alone is not the problem. See, Nibin, it's not about reacting. It's about wanting the change. McFred is not about 90 minutes. We are seeing McFred for years. You know, Shaw for years. Rashford last season disastrous. So we need that attitude. I'm not saying that you are going to win every game. You can lose the game even against the worst teams. You know, even Sir Alex lost the games against the worst teams. But there is no passion, no desire. They were just roaming around. पहले के भाई 15 मिनट पे आके देखो last game what they did, nothing. That's the problem. That United fans, you know, are so angry. भाई ध्रुव भाई, बट वही है ना कि अब देखता है तो they have much better destinations at this point of time. It's never gonna be announced. No, loan is the good move, Aaron. Loan is good move. I will believe that Frenkie is coming when I see him. Exactly. When the club announces him, then I will believe. Recruitment team so slowly. It is always the same thing. Anish bhai, welcome back. Dalot is not good enough. Shaw is not good enough. A lot of players are not good enough.
I have already given my opinion, Simon. It's 3 out of 10. It's absolutely rubbish. In my opinion, the kit is absolutely rubbish. Mark Jurado is better than Laird for me. भाई जुराडो को अभी परफॉर्म करना है, दोनों ही आई विल पुट देम, जुराडो की सीलिंग ज्यादा है, बट लेट्स सी. नो अपडेट पीपल, people are just waiting to see that till which date this saga continues. तो सारे एक तरीके से बोल रहे हैं कि how they feel this saga is going to answer. Can we get cash? No, we cannot. They will ask for crazy money. नो लोन भाई, लोन पे दोगे इससे बढ़िया तो फिर रख ही लो अपने पास. इफ यू आर विलिंग टू गिव योर डिफेंडर ऑन अ लोन, कोई सेंस ही नहीं है उसका, उससे अच्छा तो रख लो. कीप हिम, सिंपल. एग्जैक्टली. मैं देखो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई पेशेंस हमने बहुत दिखा लिया है. यूनाइटेड फैंस हैव शोन अ लॉट ऑफ पेशेंस ऑलरेडी, बट और क्या ही कर सकते हैं. we cannot do much about it at this point of time. Exactly भाई, दो उसको जाने दो उसको. Lou, don't spam the comments. He's not going anywhere. The manager confirmed. If you are not updated about it, take the update. Jurado need a good loan. Gaurav bhai, and Alvaro Fernandez, he is going to be a superstar. भाई वो तो ऑलरेडी दे चुकी है एडिडास. वो तो एडिडास ने ऑलरेडी दे चुके हैं पैसे, तो वो कुछ भी डिजाइन करे ग्लेजर्स को क्या ही फर्क पड़ता है, उनके पास ऑलरेडी पैसे आ चुके हैं. अरुण भैया says one bad difference between a vicious club. Exactly. And lot of other players as well, Arun bhaiya. Ricardo Pereira is too injury prone, Aaron. Too injury prone. Rashford is going nowhere, we all know that. And she's saying, I will only want to please give us something to celebrate. Exactly. Guys, tomorrow 9:30 the watch along will be there, so make sure you are joining in. Bhai, he is going to be there. He is going to be there. He's not going anywhere. That's the thing I'm saying. Honestly, my hopes totally depends on the team news. Totally depends on the team news. What we are trying to, what we are playing at in tomorrow's game, Anish. Let's see. Maguire. Lot of inefficiency in this team at this point of time, Jim. Not just one, but lot of it. Please do that. Save Man United. Thank you, Lou. Please do that. They will be given chances. Jim, these are the issues which we can fix in more, in less than 2 years. Every season we show incompetence, and that's why the problem keeps on getting rising. That's the problem. He is not going to get a new contract based on this performance. Who won't, Deep Bhai? Who won't take a C on a free? Which is one player we sold you? Chicha, definitely. Chicha, Aaron. He was one player he would have loved to be here. And the mess we are in at this point of time, Chicha would have been like, our savior. Chicha would have been our savior. Simple as that. I will be happy if there's a strong team with every player. Yeah, Simon, that's what I'm saying. Our defense is anyway not good enough at this point of time. Just play attacking football against the likes of Brentford. Of course, you are not going to, get the defensive covering, by playing attacking so many attacking players. But that's the need of the hour, at least against Brentford. Gardner, Ronaldo, Sancho, Malacia, Rabiot or Fred. भाई देखो,
I won't mind if McFred are benched. No, you didn't understand me, Jim. I am saying if they want to fix it, it can be fixed within 2 years. Problem is they don't want to fix it. Would you swap Rashford for Neymar? भाई मुझे ना टीम में बंदे खेलने वाले चाहिए, इंजर होके ना बैठने वाले नहीं. यू नो नेमार की क्वालिटी पे किसी को डाउट नहीं. If Neymar guarantees me 35 games in a season, 30 to 35 games in a Premier League, I would take Neymar any day. But मुझे उसके साथ बैगेज नहीं चाहिए. I don't want the baggage with Neymar. Not a single one. Danish, not a single one. Exactly, कोई सेंस नहीं है भाई. They must have met him, कुछ डिस्कस किया होगा. जूनियर लॉ इज कंफर्मिंग कि भाई दे हैव उसके भाई ने एजेंट ने उसका भाई जो उसका एजेंट है, he has met with PSG officials. Laurent is basically, you can say, the best for PSG out there. So I totally believe that उसके एजेंट से मुलाकात हुई होगी, but that's it. Exactly, अनिश भाई. Like कैसे फोर्स आउट करोगे? टेल मी, हाउ आर यू गोइंग टू फोर्स देम आउट? Yeah, 2 to 3 years if they put every resources to good use, Jim. If they put every resources to good use. Otherwise no, not even, otherwise not even 3 years. Thanks a lot, Simon. Thanks a lot for joining in. Obviously 17 million holds a key, Lou. 17 million is a huge amount. Such a huge amount, 17 million. Obviously that is the key. That is the key, and that will remain the key. Deep says, I think Maguire genuinely cares about the club. भाई देखो, अगर वैसे बोलोगे तो you can also say, about Bruno as well, that Bruno cares about the club as well. He's just going through a bad patch. So. And I won't show this comment, but क्या ही बोलूं भाई मैं अभी. We are so frustrated. Glazers won't go till the time they don't want to go. Simple as that. ठीक है? They are not going anywhere till the time they don't want to go. We are the golden. We are the club which keeps on giving them money. So they are not going to sell. They take money out of this club and they put it in their other ventures. So I'm not even thinking about them selling the club, honestly. Glazers are doing bad things ever since they arrived. It's not the first time. That's what we can say, Lucky. That's what we can say. भाई इंग्लैंड में आना बहुत मुश्किल है अनिश भाई. This in England is very, very difficult. We are not expecting anything magical, Delvin, but we are also expecting, at this point of time, we are at least expecting things, to see. We are expecting the changes. If the players who are not performing, we want to see them on the bench. These are the changes we expect. Obviously, what's happening in transfer market or other stuff, we don't have a say in that. Yeah, I totally understood, Deep bhai. Would you be happy with such a... See, लाजियो के ओनर ने पहले ही बोल दिया भाई कि मिलिंकोविच इज नॉट गोइंग एनीवेयर. ठीक है, इट्स नॉट गोना हैपन, सो हटा दो. ठीक है, ऑलरेडी गायब हो गया वो. Rabiot and Gakpo and Sacha, no, I'm not happy. Gakpo, कुछ he is not a world beater just yet. Rabiot सबको पता है. Sasa Kaladic, backup. He is not the striker who is going to take you 10 years down the line. Thanks a lot, Lucky bhai. Thanks a lot. मैं वही बोल रहा हूँ भाई, टफ कॉल्स के लिए 5 हफ्ते क्यों वेट करना? Those who are not performing, उनको
उनसे रिप्लेस करो who are willing to play first of all, and then judge how they play. Judge how they play. In Eric we trust, definitely. Deep, definitely. We just start winning. Jim, we all want top targets. If we would have given him the players that Eriktenhag would have, Eriktenhag wanted, if you would have done the complete overhaul by the preseason, the things would have been totally different at this point of time. Totally different. Proper backing, that's what we are talking about, Sanjay Bhai. Proper backing is so key, such a key at this point of time. Low profile CDM. Bhai, I would play Gardner week in, week out here. Give him at least 10 games. Give him 10 games. He clearly said for him the window is done. And bhai, Milinkovic Savic max 50. Uske upar nahi. A manager should be like that, Deep. A successful manager knows what he wants and what he doesn't want. I'm happy. Obviously ETH is just a bit too far fetched, but I think I'm very, very happy the way he has conducted, the desire to get certain number of players and which players he actually wants. Who are the players to watch out for against Brentford? Definitely, our front four again: Bruno, Rashford, Sancho, and Ronaldo. These four again. You know, these four again. So I am willing to see how they basically start. So yeah, that's what I'm saying. That's what I'm saying, Anish bhai. That he didn't ask for crazy targets. Everyone was available and at a right price before we delayed it, and the price, you know, shoots up. So exactly, that's what I'm saying. Give the likes of Malacia, Donny, you know, play Eriksen in the midfield. Give them the chance. Let them play and see what they can do. You know what they can do. अरे भाई हिपोक्रेसी बहुत है दानिश भाई, जस्ट लेट इट बी. हिपोक्रेसी तो बहुत ही है. It's okay Arnav bhai, thanks a lot for joining in. Players for batch is very, very overrated now, Lucky bhai. No one cares about the batch anymore. Everyone is worried about how much they are going to get paid and how much weekly wages they are going to have. That's it. And bhai, welcome. One question. Exactly, definitely both should be questioned. I think what they have done, I have no idea, to be very honest. We can just speculate at this point of time. If they have gone for him for almost 3 months without getting any signal, any hint from Frenkie they are the biggest fools in the world. They are the biggest fools in the world. Exactly. Everyone cares about the bag, not badge. भाई ये आने वाला है भाई. Crazy target means, we used to target someone like Ramos, in his prime, and other targets as well. Those are the crazy targets. Yeah, just a hope. No, that's what I'm saying. You won't know what a player can do till the time you don't play that player. Simple as that. Exactly, same. Exactly. Big season for him for sure. Big season for Donny for sure. Goes without saying. भाई सारे पीके की तरह पागल नहीं है ना. PK has taken a salary cut. He is putting out his deferred wage payment out of the window. So not all of them are going to do that. हर कोई नहीं करने वाला. कुछ लोग करेंगे, but not everyone is going to do it. Simple as that. Not everyone is going to do it.
भाई मीम्स ही शेयर कर सकते हैं, और वो क्या पिच पे तो उनसे वैसे भी कुछ नहीं होता। साहिल भाई वही है, सबसे बड़ी दिक्कत ही वही है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इज, even after having such a disastrous season last time around, they are least bothered. At this point of time, they're least bothered. Do you think Delo has good potential? Nahi bhai. Delo is very limited. Delo is very limited. Nobody like ETH. I don't have time to waste. All hope lost. Not yet for me, Hari bhai. Not yet. Not yet for me. But yeah, this is not looking a good scenario for sure. We are going to end below 5. By top 5, though, I am not expecting with the squad we have at this point of time. At this point of time, the squad we have, I'm not expecting top 5, guys. There is no news, Sanjay bhai. There is no credible news about the takeover. I don't think there is going to be a takeover. By Glazers को पता है, they are not going to give it up. There is some news regarding takeover bid. अगर कुछ है तो भाई शेयर कर दो. I don't have any news about the takeover bid. भाई PL is a totally different ball game, Anish भाई. Totally different ball game. Gaurav bhai, देखो, they will keep United and Chelsea interested. See, Frenkie de Jong saga, guys, the way it's moving. What's happening? You know, what's happening? So the one thing at this point of time is, if they say that Frenkie de Jong is staying, suppose if they say Frenkie de Jong is staying, that means United and Chelsea both go out. Okay, their options go absolutely zero, because these are the two teams who are in the race for him. So they are saying basically, they want to keep him, but they are also talking about the economic levers. They are also talking about, the transfer window being open. So they are keeping all their options open. I get the feeling we won't get De Jong. Let's see, Jim. Let's see. Hopefully, fingers crossed. Because of backroad. See, I will always have hopes in the game, Anish bhai. But yeah, the way we played, absolutely rubbish. Absolutely, it's not personal against the Glazers. It's just there's a different model and a better model. Yeah, Michael Knight, and he doesn't have the money. He is going to put up a consortium at best. Guys, if you are here for the first time, if you are listening to me for the first time, get in the comment section, like, share, and subscribe, and make sure that you play your part in the success of the channel. So, 20 million Sasa Kladic makes all the sense. हमारे पास कोई option नहीं है अभी. Sesko is gone, Skamaka is gone, so absolutely lucky, bhai, absolutely. Anish bhai, he is talking about a consortium. Board में है, he is talking about consortium. I am always excited about United game, Aaron bhai. I am definitely excited, but a tinge of nervousness as well. Against Liverpool, I will be like, no hopes. Just don't get beaten by a long margin. Yeah, we always do that. They will piss in their pants. None of these, out of the 11, or you can say the playing 11, only Ronaldo will survive in Sir Alex Ferguson's team in 2022. In 2022. भाई उसके लिए टाइम लगेगा, अभी ग्लेजर्स के होते हुए तो भूल जाओ भाई। ये तो लिवर तो हम कब से सुन रहे हैं। वी आर हियरिंग अबाउट दिस लिवर्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। ऐसा तो है नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन दिस हैज स्टार्टेड। लिवर वी आर हियरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, so let's see. Phil Jones is immortal. I don't even talk about Phil Jones, guys. You will never hear me talk about Phil Jones. He is immortal. He is going to stay at United, simple. None of them are passionate.
Guys, score predictions for tomorrow. In the meanwhile, I will also be joined by Sebastian tomorrow at 9:30. So we will be streaming the game at 9:30. The watch along will be there. So make sure that you are a part of the watch along. 9:30, 30 minutes before the game, the watch along will start. 30 minutes before the game, the watch along will start. So you can put up your lineup, your predictions at this point of time. Tomorrow we will be talking as well. Tomorrow we will be talking as well. If you are here for the first time, like, share, and subscribe. Adam says all we need is 2008 2009 Carrick. All right. 2-3 or 2-2 says Lucky. All right, guys, you can put up your prediction for the team. You can put up your lineup as well. Tomorrow 9:30, 30 minutes before the game, the watch along will start. So make sure that you are joining in, and we will watch the game together. Exactly. That's I have been doing this for like 3-4 seasons, Anish bhai. I am doing this for like 3 seasons. If we win, if we we celebrate. If we lose, we move on. Exactly. That's how it should be. Danish bhai, that's how it should be. Exactly, Jim. There is no point talking about Phil Jones. It's just a waste of time. It's just a waste of time. 3-1 says Danish bhai, and he says Sancho 2 goals. All right. Hopefully, fingers crossed. Danish bhai, fingers crossed. Brentford 3, United 2. Okay. I don't see us losing. I am not going into prediction, but I don't see us losing, to be very honest. In the meanwhile, our under 21s are playing against Crystal Palace at this point of time. Our under 21s are going to be playing against Crystal Palace. So we have Savage, Shoretiere starting over there. Hansen, Aaron, Forson, Mezia as well. McNeil is on the bench. 2-2 says Sahil Bhai. I was not rude. I was laughing. I was laughing at your statement, Jim. I was not rude. I totally agreed to it. I totally agree to it. That's why I said, that if we are going to talk about Jones, it's just gonna, you know, be a waste of time for us because that guy basically has done nothing and he still stays with the club even in 2022. That shows how pathetic we are with getting rid of the players. My 90-21 versus United win squad. Why? For this, I can make a prediction. United 21, under 21 with more passion, they can definitely get a draw. Aditya Bhai says 1-1. Sahil Bhai says 2-2. All right. All right. Hoping for the best. Hoping for the best. Brentford they have everything sorted out. Brentford is not going to give you anything easy. They have goal scorers up front. They have you know boosted up their midfield and their defense. So and they have a really good manager. So seriously, it looks like it. 2-0 says Hari. If we are not scoring a goal against Brentford, if Brentford can keep a clean sheet against us, that would be a new low for United. That would be a new low. Vijay Bhai says United 2, Brentford 1. Hopefully, Vijay Bhai. Commonwealth Games was really good for India. Lucky Bhai, it was really good for India for sure. So, well said, Danish. I will say again, we will thrash Brentford because only prediction is in our hands. Chalo, देखते हैं. We will see. Jim says hopefully 2 or 3-0. Okay. कल बेन मी पियोल बन जाएगा भाई. मुझे इसी बात का डर है. All of a sudden, all their defenders will become prime Piol, prime Vidic, prime Rio. That's what I worry about always. Nisha, nice one.
this is the thing that we suffer from the most. Jim, losing the ball in the midfield, and then we don't have someone with the pace of Kante or someone with the pace of or physicality of Ndidi. So when we lose the ball, we are basically done. Our defense is on, on its mercy. So I totally agree. I totally agree, Anish bhai. Most probably यही होगा. Most probably that's gonna happen. मैं वही बोल रहा हूँ. That's what gonna happen. Best way to get in form, definitely. Will we have empty stadiums? नहीं भाई, विशाल भाई. I don't feel so. थोड़े बहुत लिवरपूल वाले गेम पे you might see few people not turning up, but honestly speaking, I don't think it's gonna be an empty stadium. Honestly, I don't feel it's gonna be an empty stadium. ये मेरा honest opinion है. Chalo guys, so with this I will be ending the stream. Thanks a lot whoever joined in, and see you guys tomorrow for the watch along 9:30. 9 o'clock the lineup will be there. 30 minutes for everyone to calm down, and at 9:30 we will meet. We will talk about the game, and hopefully we will get the job done tomorrow. Hopefully. Exactly. It's okay, Jim. It's okay. That's why I made my statement clear a bit. So guys, stay safe. Good night, guys. And tomorrow मिलते हैं 9:30 बजे. 30 minutes before the game, we will be talking about the game. So that's what we are hopeful about, Danish bhai. That's what we are hopeful about. Nothing else we can do. Nothing else we can do. So guys, tomorrow 9:30 the watch along will be there. Make sure that you guys show up, and we will watch the game together. Take care, everyone. Stay safe. Have a great Friday night. And very important to fight. That the United players need to understand. United fans are always fighting for their team, inside and outside the ground, but the players need to show up the fight. With that, good night guys, stay safe and have a great weekend.